Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. We were discussing Cauchy integral formula. In the previous lecture, we have seen that how this Cauchy integral formula important is. If we are given that a function is analytic on and inside a simple closed contour C, then some specific kind of integral can be determined directly by identifying the value of the function at a specific point, and that specific point was inside the contour. अगर हमें फंक्शन की कॉन्टूर पर वैल्यू का पता है तब हम उन वैल्यूज के थ्रू कॉन्टूर के अंदर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते थे. Now, in the extension of Cauchy integral formula, we are able to identify the not only the value of the function at a specific point, but also its derivatives. हम किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव की भी कर्व के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द गिवन contour. Okay, so let us identify the formula, then we will solve some questions using that formula, and at last we will prove how this Cauchy integral formula can be achieved. Okay, so let us start this lecture by writing the statement of the theorem that give us the extension of Cauchy integral formula. Okay, so theorem says this theorem, and this theorem is nothing but Cauchy integral formula. Okay, it says let f be n, or let us write this is Cauchy integral formula which is an extension. Okay, an extension. So let f be an analytic function inside and on a simple closed contour C that is taken in the positive sense. If z0 is any point interior to C, then we have the following beautiful formula which is the extension of Cauchy integral formula. Then the nth order derivative of the function at z0 can be given by n factorial over 2 pi iota integral along C of fz over z minus z0 to the power n plus 1 dz, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. Okay, so this is our extension of Cauchy integral formula in which we can identify the value of integral differentiation of function. Okay, and that differentiation could be of any order 0, 1, 2 and so on. Okay, अब हम ये देखते हैं कि ये Cauchy इंटीग्रल फार्मूला का एक्सटेंशन है तो हम इससे Cauchy इंटीग्रल फार्मूला को भी अचीव कर सकते हैं. हमें पता है जीरो ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन इटसेल्फ एंड जीरो फैक्टोरियल इज 1. सो इन पर्टिकुलर अगर हम in particular if we set
f, the zeroth order derivative of this function at z naught is f of z naught, and n factorial is equal to 1, then what about this formula? Zeroth order derivative means अगर हम n equals to 0 put करेंगे तो हमें मिलेगा f of z naught, and that n 0 factorial is 1 over 2 pi iota, then integral along c of fz over z minus z naught. N is equal to 0, so this will be 0 plus 1, then power 1 dz. Okay, and this is nothing but the Cauchy integral formula. Okay, so Cauchy integral formula is a particular case of an extension of Cauchy integral formula whenever n is equal to 0. Okay, अब यहाँ पर खास बात क्या है कि हम इस तरीके से इस फॉर्मूला को इंटरप्रेट तो कर ही रहे हैं. लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, हम इस तरीके से तो इसका इंटरप्रिटेशन कर ही रहे हैं कि अगर हमें फंक्शन के डेरिवेटिव की किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, दैट पॉइंट इज इंटीरियर टू दैट कर्व सी, तब हम इस फंक्शन के कर्व पर वैल्यू से हम इस वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. बट द मोर इम्पोर्टेंट फॉर्म इज, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के साथ डील करना है, और ये तो और भी आसान हो जाएगा कि अगर हम इंटीग्रल की वैल्यू फंक्शन के एक स्पेसिफिक पॉइंट या फंक्शन के डेरिवेटिव से आइडेंटिफाई कर पाए. ओके, सो लेट अस राइट दिस फॉर्मूला नंबर 1 इन अ मोर यूजफुल वे. ओके, तो हम इस इंटीग्रल को इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट दैट 1 कैन be written as integral along c of fz over z minus z naught to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi iota over n factorial time derivative, nth order derivative of function at z naught. Again, this as n could be 0, 1, 2 and so on. Okay, so this is more powerful representation of Cauchy integral formula. Okay, यहाँ से हम किसी भी इस तरीके की इंटीग्रल की वैल्यू को जस्ट आइडेंटिफाइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट z नोट से हम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी मेंशन दिस वन. लेट मी कॉल दिस इज नंबर 2. सो 2 कैन बी यूजफुल इन certain integrals when f is analytic inside and on a simple closed contour C that is taken in the positive sense, and that z naught is any point inside that curve C. Okay, interior to C. Okay, so this is the interpretation of this formula, which is more important and more useful when we deal with the integration. अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, let us discuss some example, और फिर हम इस फॉर्मूला के प्रूफ की तरफ चलेंगे. Okay, so we are having example 1, and this is saying that if C is the positively
oriented unit circle, which unit circle? Mod of z is equal to 1 and fz is equal to e to the power 2z, then evaluate this integral along c of fz over z to the power 4 dz. Okay, then we need to identify this integral. We are given with the function and the curve, और हमेशा हमें ये दो ही पर्टिकुलर कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है जब भी हम इंटीग्रल को देख रहे हैं. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जिस भी पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर z नोट हमारे कर्व के अंदर होना चाहिए. ठीक है, तो हमने इस तरीके का एक यूनिट सर्कल सोचा. दिस इज आर यूनिट सर्कल. ओके, और यहाँ का जो पॉइंट है दिस इज आर z नॉट इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जो कि हमारे कर्व के अंदर है. और फंक्शन की जो हमें फंक्शन दे रखा है e टू द पावर 2z, दिस इज एंटायर फंक्शन एंड दिस इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. अगर हर एक पॉइंट पर ही ये एनालिटिक है तो इस कर्व पर और इस कर्व के अंदर भी ये एनालिटिक होगा. तो पहली कंडीशन थी कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होना चाहिए. कहाँ पर? ऑन एंड इनसाइड द गिवन सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर, और ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व है जो कि हमें गिवन है. नाउ इफ दीज थिंग्स आर गिवन देन वी कैन अप्लाई डायरेक्टली द गिवन थ्योरम. अब क्योंकि यहाँ पर z इक्वल टू 4 है तो हम इसे मोर स्पेसिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई हाउ टू अप्लाई द एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. ओके, सो गिवन दैट fz is equal to e to the power 2z, which is an entire function, and hence analytic inside and on C. So this is the given information. अभी हम क्या कर रहे हैं? let z naught is equals to 0, then z naught is interior टू C. ओके, तो ये हमारी दोनों कंडीशन होगी जिसके भी यहाँ पे वी कैन अप्लाई दी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. ओके, देन वी हैव दैट इंटीग्रल अलोंग C ऑफ fz over z minus z naught to the power 3 plus 1. Okay, that can be written as 3 plus 1. ओके, यहाँ पर z नोट की वैल्यू क्या है? 0 है. सो वी हैव z minus 0, 3 plus 1 that is 4, and dz will be equals to along the if you use the formula then this will be equals to 2 pi iota over n factorial, that means that is 3 factorial, and then the third order derivative of function at z naught. Okay, now if you specify this then this will imply that integral along C of fz over z to the power 4 dz is equal to, this fz is e to the power 2z, so this is equal to 2 pi iota over 3 factorial. Now if we identify the third order derivative of this function fz, then fz is given as e to the power 2z, then f prime z will be equals to 2 e to the power 2z, then f double prime is equal to 4 e to the power 2z, and then f triple prime of z is equal to 8 e to the power 2z. Okay, and if we apply z equal to 0 here then this value will be 1. Okay, so we will have this value is equal to 8, right?
Now in place of 3 factorial we can write 3 into 2, and through to 2 will be cancel out, so the final result is 8 by 3 pi iota. Okay, so this is the value of the given integral.